Good afternoon, everyone. Welcome to Unacademy. Welcome to this special class on English vocabulary. आज फिर से idioms उठाते हैं. काफी टाइम हो गया हमने idioms के बारे में बात नहीं करी है. Idioms किसी भी लैंग्वेज के आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द कॉम्प्रिहेंशन, ताकि तुम्हें एटलीस्ट उनको पढ़ के समझ में आ पाए कि वो एग्जैक्टली बात क्या बोल रहा है. कई बार idioms बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, समझ में आ जाते हैं. कई बार लेकिन idioms काफी घूमे हुए भी हो सकते हैं, एंड दे कैन कंफ्यूज यू बिकॉज उनका जो और लिटरल मीनिंग होता है वो उनके मेटाफोरिकल मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है. सो इसी के साथ इडियोमैटिक लैंग्वेज, इडियम सही इडियम को सही जगह पे इस्तेमाल करना या सही फॉर्म में यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन सारे के सारे फैक्टर्स के आसपास क्वेश्चंस सॉल्व करने से काइंड ऑफ बिकम्स ऑल द मोर बेटर, क्योंकि यू हैव अ वे बेटर वे ऑफ रजिस्टरिंग दोस क्वेश्चंस. सो इसी मोड के ऊपर क्लास या फिर इस टेस्ट को बेसिकली डिजाइन किया गया है. सो लेट्स काइंड ऑफ बिगिन, बट बिफोर दैट आई हैव अ कपल ऑफ मैसेजेस फॉर यू. अगर अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लो, सो दैट यू गेट अ प्लेस वेयर यू कैन डाउनलोड योर होमवर्क एंड क्लासरूम नोट्स फ्रॉम. इसके अलावा स्पेशल क्लासेस का जो रैंडम शेड्यूल होता है उसके साथ यू गेट सम हैंडल एंड यू गेट टू कीप getting notifications on what special classes from what faculties are about to happen. So we've been having special classes on YouTube for a long time now, and तुमको पता है कि इन फीचर्स की वजह से the classes on YouTube are customizable, they are flexible, they are suited to your specific needs. इन्हीं चीजों को, इन्हीं फीचर्स को द अनअकैडमी लर्निंग ऐप हैज, एंड दिस इज लाइक कॉमन नॉलेज नाउ कि स्पेशल क्लास के ऊपर दीस फीचर्स बिकम बेटर बिकॉज़ इट्स अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल. डिस्कशन ज्यादा इलैबोरेट हो सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है. आई एक्चुअली रिकॉग्नाइज द पीपल who come to my class like in a physical classroom. उसी तरह का की फिक्र होती है दिमाग पे कि they're like people are going to be looking up to you, so it's basically more interactive for the faculty, also more motivating for the faculty. Lecture notes download कर सकते हो. I can know the opinion of general opinion of the class and take the class in that direction. These are the things that make the Unacademy Learning App special class a really good platform. तो अगर अभी तक नहीं लिए स्पेशल क्लास तो सबसे पहले तो स्पेशल क्लास लो. यूज माय कोड AA001 एंड दिस विल गेट यू इनटू योर वेरी फर्स्ट स्पेशल क्लास. जिन लोगों ने स्पेशल क्लास ले लिया, दे शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन नाउ. सो वी यू हैव अनदर ऑप्शन. देयर वाज द सब्सक्रिप्शन कॉल्ड प्लस. नाउ यू हैव अनदर सब्सक्रिप्शन लाइन और प्रोडक्ट कॉल्ड द आइकॉनिक, एंड इसके अंदर तुम्हें स्पेशल अटेंशन मिलती है फैकल्टी की तरफ से. इट इज बेसिकली दे कॉल यू अप, दे गेट इन टच विद यू, दे हेल्प यू लाइक सेट अप अ शेड्यूल, दे try to solve the problems that you've been having and stuff like that. तो भाई अच्छे से सोच लो. देखो, on the right is the plus program, on the left is the iconic program. Obviously iconic program की जो कॉस्ट होगी थोड़ी सी ज्यादा होगी, एंड आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर द सब्सक्रिप्शन पैकेज. जो भी इनमें से जो भी चूज करे हो, द ड्यूरेशन दैट यू पिक फॉर द सब्सक्रिप्शन पैकेज शुड लास्ट टिल द वेरी एंड, यानी कि एग्जामिनेशन तक तुमको वो एक्सटेंड होके वो हेल्प मिलनी चाहिए. ऑलराइट, हैविंग सेड दैट, remember my code AA001, the one on the right. Use that code to get an additional 10% discount on whatever subscription package you're about to buy. Until 25th of January, तुम अगर सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो हर 2 महीने के सब्सक्रिप्शन, सॉरी 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर तुमको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे. कोई हर 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर तुम्हें 1 महीना का फ्री मिलेगा. This is only till 25th of January. So again, one more motivating factor for you to kind of make up your mind now. अच्छा, एक चीज और याद दिला दूं कि these prices are going to be revised from February. So it's a good thing that you should like start thinking about these and make up your mind. फालतू क्यों पैसा वेस्ट करना है एक्स्ट्रा? जब लेना ही है सब्सक्रिप्शन पैकेज, you made up your mind. If you know confused, that's fine. If you're like not going for a subscription package yet, it's fine. But then once you've made up your mind, there's no point waiting. So make sure कि उससे पहले ये चीज decide कर लो and get the transaction done so that you don't have to like end up paying a little more unnecessarily, even a little more. All right, so let's begin. क्या कर रहे थे हम लोग? Idioms कर रहे थे. मैंने क्या बात करी? What did I try to tell you? मैंने बोला कि ultimately idioms are very crucial to your understanding of the language. देखो, language की एक्चुअल नेचर तुम्हें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उसका इडियम समझ में ना आए. एंड लोग सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते रहेंगे तो इट बिकम्स बोरिंग. इडियम मेक्स द लैंग्वेज इंटरेस्टिंग, बट फ्रॉम a comprehender's point of view, यानी कि somebody who's like sitting in an examination like CLAT, उसके लिए तो और भी important हो जाता है because उसकी पूरी की पूरी understanding based है. अच्छा, vocabulary words that can stand out to you. जो एक आप पैसेज पढ़ रहे हो उसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, यू डोंट इवन हैव टू मार्क देम आउट. इट्स लाइक वी आर ऑब्सेस्ड विद डिफिकल्ट वर्ड्स. तो हमारी आंखें ऑटोमेटिकली, इवन वी व्हाइल वी डोंट वांट टू, हमारी आंखें जानबूझ के वो डिफिकल्ट वर्ड्स ढूंढ लेती हैं एंड दे वी काइंड ऑफ फोकस ऑन देम. लेकिन इडियम्स कैन गेट लॉस्ट इन द क्राउड.
मतलब ये कि उन तुम्हें अलग से समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से यहाँ तक इडियम है। इट काइंड ऑफ सिट्स इन वेरी स्मूथली विद द फ्लो ऑफ द सेंटेंस एंड समटाइम्स इट्स इवन डिफिकल्ट टू टेल कि ये जो है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। यानी कि लैंग्वेज तो पूरी की पूरी इडियम ही होती है। इवन इफ आई से अ सिंपल सेंटेंस लाइक वी हैव वर्क टू डू। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस हैव का स्ट्रक्चर है, हैज या हैव। उसके बाद देयर इज नाउन प्लस द टू इन्फिनेटिव। ये स्ट्रक्चर ही अब अपने आप में ये एक रेकग्नाइज स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, रिटन लैंग्वेज में यूज किया जा सकता है। सो ये पूरा का पूरा जो सिंटेक्स बताया मैंने तुमको, और दिस काइंड ऑफ दिस एंटायर फॉर्मूला जैसा इक्वेशन टाइप की जो एंटिटी है, इसको मैं सिंटेक्स बोल सकता हूँ। दैट इज एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन और अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। सो ऑफन टाइम्स ये पॉइंट किया था, ऑफन टाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू से कि इडियम क्या है इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, सो ही स्टैंड्स आउट ऑफ एवरी क्राउड। अब यहाँ पे स्टैंड्स आउट, इट्स सो नेचुरली अंडरस्टैंडेबल कि वो क्राउड में से अलग से दिखाई देता है वन वे और द अदर। इज वेरी इंटेलिजेंट और इज वेरी गुड लुकिंग, इज वेरी टॉल, इज वेरी ब्रॉड, आई डोंट नो, इट फॉर वन रीजन और द अदर ही स्टैंड्स आउट ऑफ एवरी क्राउड। हर तरह के क्राउड में ही काइंड ऑफ स्टैंड्स आउट। यू डोंट इवन थिंक कि ये इडियम है बिकॉज यू अंडरस्टैंड इट। अलग से दिखाई नहीं देता है। आई वर टू आस्क यू इसमें इडियम क्या है, इट माइट बी डिफिकल्ट। He took the high road and forgave me. Again, took the high road is like of a higher moral plane. Idiom है। It's hard sometimes to even pick out idioms. So idioms की understanding natural होनी चाहिए, जैसे कि होती है, जैसे sentence के अंदर you could understand, sentence के अंदर you could understand। लेकिन जितने ज्यादा idioms पता होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। सबसे अच्छा तरीका idioms को याद रखने का to solve questions because they give you, and वो भी context वाले questions, सीधे सीधे idioms के meanings वाले questions कम करो, ज्यादा क्वेश्चंस वो करो जिसमें सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स इन्वॉल्व हो, सो दैट यू कैन रिमेंबर, यू कैन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट अराउंड दोस इडियम्स। जिन सिचुएशन से तुम यू रिलेट करके रेफर करके, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द मीनिंग ऑफ द इडियम्स। सो आई होप दिस इज, ये बात समझ में आ गई। चलो लेट्स बिगिन विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी ब्रिंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट यू माइट फाइंड इंटरेस्टिंग। Let these be warm up questions. Give me a second please. Okay, so can you, ये सीधे अभी मैं तो तुमसे सिर्फ इडियम का मीनिंग पूछ रहा हूँ सीधे। लेट्स सी, मुझे चलो तो, क्योंकि ये सब इडियम्स तुमने लिस्ट्स में पढ़े होंगे, सो आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें इनका मीनिंग याद होगा। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज oneself, टू कन्फेस विदाउट अ रिजर्व, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट blooms, none of these. What is the answer to this question? Okay, to gain prominence, to make a clean breast of it is to make the situation clean. इसको इस तरह से याद रखने की कोशिश करो। So to confess without any reserve is the answer. इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी सिचुएशन, अपने दिल पे जो बोझ था, जो राज तुमने छुपा रखा था, तुमने बिल्कुल क्लियरली बता दिया, सामने वाले के ऊपर ओपन कर दिया। Now that there is nothing that you are reserving or you are keeping back. तुमने सिचुएशन, अब तुम यू लाइक क्लीन, ये ही इज क्लीन। उसने बोलते हैं ना, ये भी एक इडियम होता है, oh he's confessed to the police and they have forgiven him, he's clean। अब उसका रिकॉर्ड क्लीन, there is no criminal record on him now।
It has been like washed away or something. All right. What about this one? I'm so sorry. To catch a tartar. क्या मतलब होता है इसका? To trap wanted criminal with great difficulty. Yeah, this is like the tricky part, na? To catch the tartar. Tartar is what? Is like any kind of mushy um, mass of food, किसी भी तरह का. Salt used specially in baking powder, in instructions that forms on teeth and gums, anything that kind of sticks to something sticky, चीजों के लिए you can like generally use it. So, so इसीलिए वो बोल रहे हैं to trap a wanted criminal with great difficulty, to catch a dangerous person, to meet with disaster, to deal with person who is more than one's match, and none of these. The to catch a tartar का मतलब होता है to kind of deal with somebody a bigger enemy. So he was bigger than me, and a fight ensued, and I was still able to catch the tartar. He was while he was bigger than me, he was like huge. तो कहने का मतलब होता है अपने से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने के लिए to catch a tartar वाला idiom यूज होता है. The idiom here is meaning of the idiom is to deal with a person who is more than one's match. ये सब बहुत कॉमनली फाउंड इडियम्स होते हैं, और नो मैटर तुम कौन सी लिस्ट से पढ़ रहे हो, तुमने ये कभी ना कभी जरूर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दीज. इसीलिए मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूँ. आई विल पुट दीज इनटू सेंटेंसेस. आई विल डू व्हाट आई एम से बीन प्रीचिंग कि उनको you got to keep them in context, and we will do that in a moment. What about this? To have an axe to grind. What is the meaning? A private end to serve, to fail to arouse interest, to have no result, to work on both sides, none of these. A private end to serve. So इसको इस तरह से यूज करते हैं. I have an axe to grind with you, यानी कि I have a personal matter if you of mine that I need to take up with you. अब वो कुछ भी हो सकता है, वो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, वो पुराना बदला भी हो सकता है, टेलिंग ऑफ भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम द जनरल क्राउड, थोड़ा सा प्राइवेट सा मैटर, पर्सनल थिंग ऑफ माइंड. आई होप दिस इज गुड वार्म अप. चलो अब सेंटेंस वाले इडियम्स करते हैं, सो दैट वी कैन एक्चुअली पुट टू टेस्ट कि हमें समझ में कितने आते हैं इडियम्स, हाउ मच ऑफ द मीनिंग आर वी एबल टू डिराइव फ्रॉम इट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ऑलराइट. ओके, चलो लेट्स पुट दीज इनटू some kind of context now. So I'm sure they will fight tooth and nail for their rights. I'm sure they will fight tooth and nail for their rights. क्या मतलब होता है? With all their might, without any other weapon, resorting to violence, very cowardly. इस तरह के और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल जो भी मुझे याद आ रहा है, that is bag and baggages. So he left. Okay. Tooth and nail का मतलब होता है with all them, with everything that you have. You have, if you fight with tooth and nails, what basically you are doing is like you're making sure that everything that you have is being used to win that war.
right up to the very last things that you have, like tooth and nails. So I hope that is, मतलब तुमने नाखून और दांतों से भी लड़ना शुरू कर दिया. So that is basically using everything that you have to win that fight. So the answer is with all their might. तुमने ध्यान दिया होगा इस एक्सप्रेशन में भी एंड इस एक्सप्रेशन में भी, यहाँ पे मतलब होता है ही लेफ्ट फॉर गुड गुड बैग इन बैगेजेस, यानी कि अपने सारा सामान व्हाटएवर ही हैड, ही काइंड ऑफ ही टुक इट विद हिम. सो तुमने देखा यहाँ पे विद नहीं है कहीं पे भी, it's not there. I'm sure they will fight with tooth and nail नहीं बोला, they will fight tooth and nail for their rights. It kind of इस तरह से use होता है. So that is not just the idiom but the idiomatic expression, and the way the idiomatic expression has to be used is very important. All right. So we are in a hurry. The road being zigzag, we had to cut off a corner to reach in time. The road being zigzag, अच्छा comma आना चाहिए हमें. The road being zigzag, we had to cut off a corner in time. To cut off a corner का मतलब होता है क्या होता है? For example, if you have this and suppose ये एक road है and the basic way is like this, but then what if you go like this? You just cut off the corner and you also took a shortcut. So that is the answer. Idioms के background story में जाओगे तो तुमको उनको याद रखने में ज्यादा आसानी होगी. Try to at least form something in your mind कि ये कैसे बोलना शुरू किया होगा लोगों ने. What must have happened once that उसका reference बना के people start kind of do stuff, keep doing that. तुमने जैसे हिंदी में मुहावरे यूज होते हैं, तो तुमने वो मुहावरा अगर सुना है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. So that is, there must have been some observation why somebody, at least you can guess, at least you can remember it like that. They must have somebody, I must have seen that somebody who got burnt once by milk was also very, and also was very 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 careful while eating other white colored things. So that is the background story, and उसकी वजह से मुझे idiom थोड़ा better याद रहता है. So in spite of the efforts of all peace loving people, world peace is still a far cry. कैसा लग रहा है ये? Far cry is a long shot. It's like a very unlikely situation जो कि मतलब बोलते हैं ना कि यार ऐसा होने के चांस तो बहुत कम है. Something of that sort. So यहाँ पे क्या है? In spite of the efforts of all peace loving people, world peace is still a far cry, an impracticable idea, an abstract idea, out of reach, a long way off. The answer here is D, out of reach. It's a far cry, right? An impracticable idea का मतलब है जिसको implement ही नहीं कर सकते. Abstract idea again, something that is does not exist in the real world, only exists in the mind. Out of reach is like it's still possible, it's practicable, it's not an abstract idea, it's a very generally physically implementable idea, but it is still out of reach, it is a long shot. Okay.
I cannot get along with a man who plays fast and loose. क्या मतलब होता है इसका? Behaves in an unreliable and insincere way, has a loose tongue, lives a life of ease and luxury, does not know how to behave himself. Limits को push करने के लिए use किया जाता है. When you try to like play fast and loose, you're basically um, playing with with your fate. You're trying to you're trying to test your luck. You're trying to do stuff जिसके basically जिसके बारे में which has questionable endings. मतलब I don't know पर लगा के पहाड़ से कूद जाना would be playing fast and loose. कि that is like तुम्हें जो life मिली और जो जिस तरह की existence मिली उसको तुम for granted ले रहे हो. You're stretching it too thin, something of that sort. So behave in an unreliable and insincere way. Okay, this one's interesting. ये तुमने कई जगह पे पढ़ा भी होगा. You must have come across this a lot. There is no love lost between two neighbors. No love lost. यानी कि कोई प्यार नहीं खोया गया उनके था ही नहीं तो कहाँ से खोएगा. It's like when the two neighbors start fighting, you kind of say this. There is no love lost between them. इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कभी प्यार नहीं था. ये जो लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो उनके बीच में जो प्यार था वो खत्म हो गया था ही नहीं कभी. So that is the meaning of this idiom. The answer is C. Intense dislike. The question of abolition. Wait, this. So the question of abolition of private property is still a moot point. Question of abolition of private property is still a moot point. Moot point किस चीज को बोलते हैं? जिसके होने का कोई मतलब ही नहीं. It's basically not something जिसकी वजह से undecided. Moot point is something जैसे कि, and let me give an example. It does not apply. It does not even apply anymore. That is the meaning. यानी कि so suppose because a couple of your place is locked, there's nobody home, and a couple of your friends from the other town visit you, and they give you a call कि हम तेरे घर पे हैं यार तू कहाँ है? So you can say अरे हाँ यार क्या करूँ? तो तुम जल्दी से चाबी लेते हो, and then you drive like a crazy person, and in 10 minutes you reach your home, and then तुम उनसे बोलते हो कि अरे यार मैं बहुत तेजी से गाड़ी चला के आया, and then when you try to find your keys, you realize कि तुमने वो जो चाबियां हैं वो छोड़ दी, ऑफिस में ही छोड़ दिए, जहां भी तुम थे वहां भी छोड़ दिए. So all that driving like a crazy person was moot now because you don't have the keys in at the end. It's moot to say that you drove like a crazy person or you try to reach so early 10 minute में पहुंच गया, what a feat. But it's moot now because it does not apply anymore. You don't have the keys. जिसके लिए वो सब किया गया था वही चीज नहीं हो पाई तो उन कीज का कोई मतलब नहीं है. आई होप इट्स क्लियर. जल्दी आने का कोई मतलब नहीं. Purvi, when will you take the plus classes for English? Waiting for your lessons. You mean a plus course? Okay, I'm about to launch a course in a couple of days at the most, probably day after tomorrow, so we'll start a plus course. I hope that answers the question. I'm basically trying to decide what topic must. Can you suggest anything that you would take like to take a course on? A small course? Think of a 10 to 15 hours session, like a small course towards the end of the month. कौन से topic के ऊपर would you like to kind of cover it? I've been taking these suggestions for a time now, so anybody who's interested मैं उससे पूछ लेता हूँ. So if you're here, just let me know कि what topic या किस तरह की classes लेना चाहोगे तुम. What is the topic that you want to share, like visit? Okay.
चलो चीजें अब थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कुछ और कहीं से कंटेंट उठाते हैं, सो दैट वी गेट अ लिटिल मोर प्रैक्टिस. I hope this is visible. So there are 5 cases. हर केस के लिए तुमको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. Now you kind of based on the context you have to decide कि इनमें से क्या पुट करना चाहिए. Again, यहाँ पे fill in the blanks को successfully fill कर पाना is not the objective. The objective is be able to comprehend the sentence. We are only latching on to anything that हमको थोड़ी सी रीडिंग प्रैक्टिस या कॉन्टेक्स्ट में पुट करके, किसी सिचुएशन में, किसी रेफरेंस में पुट करके हमें इडियम्स का मीनिंग समझने या उनको कंसिडर करने के लिए फोर्स करता है. सो यस, तुम्हें क्या बोलते हैं, तुमको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आने वाले, एंड यू कैन लाइक स्टॉप वरिंग अबाउट दैट. बट व्हाट यू रिक्वायर हियर इज कि तुम सिचुएशन समझ के उन इडियम्स को एटलीस्ट प्रोसेस कर पाओ. और ये सब सरफेशियल सी इडियम्स हैं, काफी कॉमनली नोन वो होते हैं. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला है, दे से दैट एवरी फैमिली हैज an Aunt Sally, a blot on the landscape, a skeleton in the cupboard. But if this affair becomes public, it will certainly be end of Smithson's political careers. हर family के अंदर कुछ skeletons होते हैं, people with things which are people are embarrassed about that they would come in public. So that is the meaning of skeleton in the cupboard. आगे चलें. Rachel is always daydreaming, building dash. It's time she came down to earth and found herself a job. So what can she be building? डे ड्रीमिंग के साथ क्या अटैच करोगे? पाई इन द स्काई, कासल्स इन द एयर, अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ, कासल्स इन द एयर. दैट इज what gets here. Rachel is always daydreaming, building castles in the air. हवाई महल बनाना हिंदी में भी होता है. I told you that after a few weeks, Janet's enthusiasm for horse riding would vanish, and I was right. It was just a flash in the pan, a straw in the wind, a storm in a teacup. छोटी सी बात का बेवजह का बतंगड़ बनाना is a storm in a teacup. That is what it fits. Aunt Martha told us that she's going to mention John in a will. Really? Well, that is dash, because John was never a favorite of hers. Okay, a blessing in disguise, a turn up for the books, a beginner's luck. Okay, give me a second. Okay, so Aunt Martha told us that she's going to mention John in her will. Really? Well, that is dash. A blessing in disguise cannot be the answer. उसका मतलब होता है कोई बुरी चीज जो eventually kind of ends up benefiting you. Beginner's luck is when somebody starts something new. तो शुरू में the initial success that he gets is called beginner's luck. Even while he's not good at it, he's like experienced some good times because of his beginner luck. A turn up for the books is something, a turn of events that is like very surprising. Joe was depending on a £50,000 loan from the bank, but he has just heard that they will.
only led him 30,000. Oh dear, that's that puts dash, doesn't it? A spoke in the wheel, a cog in the wheel, a thorn in his side. A spoke in his wheel का मतलब होता है um, out of the many aspects or many factors that are like working in a situation उनमें से एक होना. Cog in the wheel का मतलब होता है एक insignificant सा part बन के रह जाना किसी बड़े होल का. And a thorn in his side is something that a thorn in his side, when you get a thorn anywhere in your body, it's going to like affect the way you walk. You become going to become slow. You're going to become a little cranky. A thorn in his side is what the answer is. So let me read that out to you again. Joe was depending on a 50,000 pound loan from the bank, but he has just heard that they will lend him only 30,000. Oh dear, that puts a thorn in his side because that is something which is going to hurt him for a long time. All right, so that's the answer. Sarah works for the secretarial agency, but she makes money for Jam a bit on the side, the luck of the draw. Sarah works for a secretarial agency, but she makes dash hairdressing in the evenings. Okay, this I'll have to see. Oh yeah, what am I thinking? Sarah works for the secretarial agency, but she makes a bit on the side. Side वाली income, ऊपर वाली income को bit on the side बोलते हैं. She makes a bit on the side, hairdressings in the evening. So this is what she does, and this gets her a bit on the side. I hope it is clear. Questions from people. Oh, the very favorite question people keep asking. CLAT में आएगा ये सर? नहीं आएगा बच्चा. नहीं आएगा. Don't worry about it. मेरा एक क्वेश्चन बस ये है कि मतलब do you do this the entire day? दिन भर यही करते हो क्या आप? एक और क्वेश्चन है मेरा, मतलब दिन भर करते क्या हो फिर? मतलब what would you do? Solve RCs and RC one after the other? Good luck with that, buddy. Okay. This is extra practice. This is you getting to know your idioms, and idioms are going to be in your RCs. Even while अलग से कोई बोले नहीं तुम्हें, the RCs are going to have a lot of idioms. And if you don't know your idioms, you will not be able to understand the RCs. So that is the answer to your question. Okay, so I hope this short test was helpful. Again, बीच बीच में इस तरह के we will start doing, we'll keep doing these expressions over a period of time. उससे we'll get into more practice, हमारा comprehension better होता जाएगा. And again, तुमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, even while डेली बेसिस के ऊपर हमने जो डेली रूटीन जो एक डिस्कस किया कि इस तरह से रोज अपने प्रैक्टिस सेशंस को यू काइंड ऑफ पुट इट हियर एंड यू प्लेस देम एंड यू शेड्यूल देम. उसके अंदर बीच में प्लीज इडियम्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस 5-10 मिनट की एवरी थर्ड और फोर्थ डे. इडियम वोकैबुलरी रोज पढ़ रहे हो, आई होप पढ़ रहे हो. अगर वोकैबुलरी रोज पढ़ रहे हो उसमें से हर 3-4 दिन में से एक दिन इडियम्स कर लिया करो इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स, सो दैट तुम्हारी वो अंडरस्टैंडिंग और टच बना रहे उनसे. All right, guys. So I guess this is it. This is the small test that I wanted to have with you. A couple of batches that I wanted to discuss is one is called Crack Clat and ALIT. This is 2022 के लिए 3 month का batch है, English and Hindi के combination में. Let's Crack Clat is 2023 के aspirants के लिए English and Hindi के combination में handling starting on the January 21st. मास्टर लॉ इज फॉर ऑल स्टेट एग्जामिनेशंस. तो अलग अलग जो एग्जामिनेशन स्टेट्स के होते हैं उनके लिए ऑल इंग्लिश बैच स्टार्टिंग जनवरी 27th. एक्सेल लॉ इज एनएलयू एलुमनाई स्पेसिफिक बैच फॉर 23 एस्पिरेंट्स एंड ये एक साल का बैच है स्टार्टिंग ऑन जनवरी 28 ऑल इंग्लिश. ULAT and weekly T20 tests को प्लीज ध्यान रखना. These are tests which will give you a glimpse into कि तुम्हारा तुम जो पढ़ रहे हो उसका रेलेवेंस क्या है, तुम जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, वगैरह वगैरह. Alright. अब you have a helpline for
all your subscription related problems. So if anytime you are confused about anything in the subscription or the description, call this number from Monday to Saturday 10 a.m. to 7 p.m. Alright, so आज 19th January है और English language का revision है. Please get the details and join it if you're interested. Finally, अगर कंटेंट में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट, इनसेंसिटिव, इनएक्यूरेट नजर आया तो प्लीज उसे रिपोर्ट कर दो. एंड इफ यू आर करेक्ट तुम्हें एक छोटा सा प्राइज मिलेगा. दिस इज बक्स बाउंटी व्हिच अलाउज यू टू डू दैट. एंड फॉर अस द कंटेंट बिकम्स मोर रिफाइंड एंड मच बेटर. ऑलराइट, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज इसको लाइक करो, इसको शेयर कर दो. एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग कंटेंट लाइक दिस टू यू. आई विल कीप प्रैक्टिस हैपनिंग फॉर यू. चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना. एंड आई विल सी यू अराउंड. वील कीप दीस डिस्कशंस हैपनिंग. एक छोटी सी खबर ये है कि at 1:15 p.m. right now, I have a special class where we are going to be discussing previous year's paper. And हम CLAT 2021 से start कर रहे हैं. That is the first question. That is the first paper that we're going to pick up. So today, अभी 1:15 से we are going to be starting previous year's questions का discussion. So I will see you around. Have a nice day.